Okay. Uh, Good evening, everyone. Today we are going to talk about we'll talk three things. This research matrix is slightly bigger one because we have lots of different components. And then we will talk about the citations, how to increase your citation, what are the different problem we are having. And later on, we will talk about something about the referencing. So if you know, this is roughly the publication scenario. This is slightly older data, up to 2022 only we are having. So if you'll see, this is the article, how much article is going to be published. This is in the million. So every year by there is a growth. I mean, why these things are significant? Because yesterday also we were talking about the selection of a good journal or reputed journal. Because not only publication increases, number of journal count is also going to increase in the market. So if you see the publication statistics throughout the world, India's position is at the third position, behind the China and the USA, and different other countries having this is the percentage contribution of different country. Uh, this is the number of journals, how much journals we are having if you compare from 2010 to 2020 only. So in 2010 we had roughly 35,000 journals. In 2020 we are having roughly around 50,000 journals. So a huge growth is there in the last 10 years, you have seen it, and this is ultimately growing only. So that's why we need to evaluate journals, we need to find good journals and be visible. So for that one we need some kind of matrices. What is matrices? Like you are going to evaluate your if you want to evaluate assignments, interview, and number of things. So these are called, you can call it parameters. Similarly, for research output, for anyone, like either for as an individual, if I'm a researcher, so if you want to evaluate myself, so what you can do, uh, as an individual evaluation, or if I want to evaluate a, you can call it a journal, then also you need a research matrices. So any parameter which can give you, which can measure the research output of anyone or anything, any organization, any institutions, any journal, it's called as research matrices. So research matrix is these are the tools, or you can call it indicators, which normally help us to measure the reach, quality, as well as the influence, or you can call it impact of research work. So research metrics are normally, it is a quantitative tool and numerical value we are having, which measures the value of research output. Research output means either it will be book, chapter, paper, conference proceeding, whatever different things. We will go to a Scopus and we will see what are the different type of articles we can publish it. So these research matrices normally we use to evaluate authors, and authors means researchers, articles or journal or institutions. So research matrix normally, I have yesterday also I have told you, most of the research matrices, yeah, most of the parameters are based on the citations only. So these research matrices normally include the citation tracking, H score, H index, or journal impact factor. These are the three basic criteria, yeah, basic things which everyone must know. H index, journal impact factor, cite score also you can add it. Otherwise we are having huge number of different kind of matrices. So I will give you the list of different matrices by which we are going to evaluate these metrics. Yeah, these parameters normally play a significant role in different requirements. Like if I am going to apply for assistant professor or associate professor or for promotion to the professor, we require API score, and API score varies journal to journal or published paper to paper. That API score have one of the criteria is impact factor. Okay. If you are going to apply for some funding to some grants or some funding agency, either it will be government funding agency, NGO, or non-government funding agency,
They need your publications. If you are having sufficient publication in the relevant, in the good journals, you have a huge chances of getting funding. Similarly, institutional rankings, uh, number of publication as well as their impact plays a significant role in institutional rankings, accreditations, or strategic planning. So these research matrices have a huge impact in different fields. Either it will be for individuals or for organizations. Now we are going to divide these research matrices, these parameters, into 5 different categories, you can call it. uh, First one is journal level matrices. These matrices, yeah, these parameters by which we evaluate journals. So assess the prestige or influence or visibility of a journals. Some of the examples are impact factor, site scores, Scimago journal, SGR value, SNP, or quartiles. We will talk about most of them. Then we are having second one is author level matrices, by which we are going to evaluate a author or a researcher. Like I am a author, I am a researcher. So if you want to evaluate my research output, so you can ask me what is my H index, what is my I10 index, how many citations I am having, what are the average citation per paper I am having, what is the FWCI of my papers. So these are the different research metrics by which you are going to evaluate a individual. Third one is article level matrices, which measures the different research, individual research papers. Like for example, uh, in my class, if I'm teaching a postgraduate classes, so in my class, if I will have a 15 students, so same lecture I'm going to deliver to all the students, same notes I'm going to hand over to all the 15 students. But in the exam, every individual or every student is going to perform differently. Similarly, if you are going to publish 10 papers in the same journal, every 10 paper does not have same impact, does not give you the same result. So every paper is having their own influence, their own impact. So that called as article level matrices, by which you are going to evaluate every single articles, their performance. Fourth one is institutional or department level matrices, by which you are going to know this organization is doing very good in research, this organization is not doing very good in research. So that is total number of publications, total citations, research or income or collaborations. And last one is called as alt metrics, which is your coverage, research coverage, yeah, coverage of your research on different social media, news coverage, policy, blogs, and different other platforms. So your social presence of your research. So now I'm going to give you the list. If you want, you can take the screenshot of these things. So these are journal level matrices. These are the list name, like impact factor, 5-year impact factor, site score, SGR value, SNPs, IGN impact factor scores, article influence score, uh, then journal quartiles, acceptance rate. In this one, what we are going to talk today is, we will talk, uh, just give me 1 second. We will talk about the impact factor. 5-year impact factor is almost similar to impact factor, only we are going to take consideration of 5 years rather than 2 year. Then we will talk about the site score. Okay. And then we will talk about the quartile. These are the 3 important parameters by which you are going to evaluate journals. Okay. So at the same time, we are having some author level matrices by which you are going to evaluate a particular individual or particular researchers. There we are having H index. This is important. We will talk about this one. I10 index. We will discuss about that one. Total number of citations, average citation per paper, and then we are having some other index which is not well known or not people are talking about too much. That is G index, M index, a number of publications that everyone is knowing, and collaboration index. So these are called as author level metrics by which we are going to evaluate a individual author. Then we are going to have article level metrics by which you are going to evaluate every article. So citation count on every paper, individual paper. FWCI, this is called as field weighted citation impact. So we will talk something about this one also, because nowadays this field weighted citation impact is having means many of the ranking accreditation agencies are asking about FWCI, field weighted citation impact. Then we are having relative citation ratio.
the download or view count, altmetric, attention scores, and plum scores. These are related to, you can call it the social presence. Second last, we are having institutional or department level matrices, by which you are going to talk about the, like IISc, Indian Institute of Science, one of the best research institution. How you are going to talk about IITs are doing very good in research, CSR labs are doing very good research, ICMR is doing very good in research. How you are going to tell that why these institutions are? So you are going to evaluate those institutions based on these parameters. What are the parameters? Like total publication, total citation, the average citation per paper, H index of institutions, grants, how much grant they are getting it, collaborations, national, internationals, and their rankings. Then last one is your social media presence. In that one, we are going to, we are having like Twitter, Facebook, LinkedIn, research gates, news coverage, blog posts, Wikipedia, and number of other social presences. Clear? So these are the 5 different type of research matrices we are having for 5 different kind of classes: journal, article, individual, institution, and then altmetric. Is it clear for everyone? Yes, sir. Fine. So one by one, we are going to talk about some of the important research matrices we will talk, which commonly we are discussing. So first one is citation. Everyone is knowing what is citations. Like whenever I'm going to publish my paper, if someone else is using or my paper as a reference, uh, or refer my paper in their own article during publications, taking my paper as a standard or the references, so that is called citations. So normally what we call it, citations are the currency of academic research. A citation is a formal reference of another person's works, like it can be article, it can be book, it can be data, or it can be any kind of a research output which someone else is going to refer in their own research. Or it is a kind of acknowledgement. That time we were talking about yesterday we were talking about the plagiarism. So if you are going to give proper citation, so citation is kind of acknowledgement to whom use whose idea or words you are going to use it. Why citation is important? There are a number of reasons why citation is significant, because it gives you academic integrity. It prevents the plagiarism. Yesterday only we have discussed. It shows how current work fits into the existing knowledge. It gives you credibility. Someone like if 50 people is going to refer my paper, so it gives me more credibility. It's measure the impact. So citation counts are widely used to access the influences. Citation normally your visibility on the scientific platform or scientific community, your visibility is going to be evaluated on the basis of citations only. And publication standard, journals and peer reviewers look at the quality and relevance of citations. Now, if I'm working in the biochemistry and my paper is going to be cited by a person who is working in the engineering side, electrical engineering, mechanical engineering, or humanities, that citation is not very significant for me. If my paper is going to be cited by someone who is working in my own area, then it will be important for me. Then it is going to give me better impact. So what I was talking about, the field weighted citation index impact, FWCI, जो मैं बात कर रहा था. So FWCI gives you, if your paper is going to be cited by, not only citation, who is going to cite it, कहाँ पे citation हो रहा है वो important तो है ही, उसके अलावा ये भी important है कि कौन आपके पेपर को cite कर रहा है. हम बात करेंगे उस पर. Now research publication, if you'll see, we have seen already saw the graph of how research publication increases. So roughly more than 4 million scientific articles are published every year, and that number is increasing every year. अब इतने पेपर एक साल में पब्लिश हो रहे हैं, तो सोचिए how much paper we are having on the scientific community, on the scientific platform, or the different databases. उस पर्टिकुलर उतने नंबर ऑफ पेपर में से मुझे कुछ पेपर सेलेक्ट करने हैं जिसको मैं रेफर करूंगा. सो इट इज अ काइंड ऑफ, यू आर गोइंग टू फाइंड अ नीडल इन हे स्टैक. इट इज वेरी डिफिकल्ट टास्क टू फाइंड अ गुड पेपर फ्रॉम दैट वन. सो इट इज इम्पोर्टेंट दैट यू विल फाइंड वे टू मेक योर आर्टिकल स्टैंडर्ड. तो आपके आर्टिकल आप
जितने बड़े ये समुद्र है पेपर का, उसमें से आपका पेपर दूसरों को विजिबल हो जाए. योर पेपर विल बी विजिबल टू समवन सो दैट दे विल रेफर योर पेपर. So you have to use different kind of tricks, tools, techniques so that your paper will be visible to scientific community. So people will read your paper and refer it, give yours, so that your citation will increase. अब ये क्यों important है? Because if you say roughly 82% of the article which is published in humanities are not even cited ones. So only 18% article is going to get more than 0 citations. One or more citation सिर्फ 18% आर्टिकल को मिलता है. No one even referred 30% of the peer-reviewed article in the social sciences and 27% in the natural sciences. So your paper should be visible, then only people will read it. So now this was the trend which earlier it was used. Either publish or perish. If you are publishing, it's fine. Otherwise, it will be wastage. Now we are going to call, now the trend is publish and be visible. Not only publish, perish, it will be publish and be visible. So research, publish, grade, promote, so vanish or visible. So these are the different sequence, you can call it. First you do the research by different things. So you will have rational hypothesis, clinical or data analysis. Then you are going to publish your articles, manuscript, peer review, revision and publication. Then you are going to, after publication, the actual things starts, where you have to make a strategy so that your paper will be visible to someone else who is want to read in your, or who is working in your area. So you have to create a strategy for readers so that your paper will be more visible to them. And then you need a promotion. For this promotion, we are having Altmetrics, like ResearchGate, we are having academia.org, we are having Menly, we are having a number of other platforms we are having. So we will talk about some of the platforms, like you can see Twitter and LinkedIn, YouTube and Facebook. So not only earlier what क्या बात करते थे, do research and publish it, so your work will be finished. Now it is not only research, do, publish, then a strategy and promote also you have, so that you will get more citations, more visibility. There are a number of reasons why paper are not going to be cited. मतलब आपके पेपर क्यों लोग साइट नहीं करते हैं? Because contents of paper is not very good. The paper was not widely advertised. You have not spread it on the different platforms. The paper cites very few paper. आपके अपने पेपर में बहुत कम citations होंगे. So these are some of the reasons why your paper is not going to be cited. अब किस तरह के पेपर की citation ज्यादा मिलती है? Which type of paper are going to have more citations? This is a kind of analysis which has been published by in a journal. Link मैंने दे दिया है कहाँ का ये डाटा है. This is published in IEEE Access. यहाँ पे आप देख सकते हैं. So उनके हिसाब से, according to this analysis, any paper whose title is roughly 10 plus minus 3 words, 7 से लेके 13 वर्ड तक अगर आपका टाइटल है, तो your paper will have more higher chances or get a better chances to get it cited. If paper is having 6 or more authors, and that may be from the different organizations. अगर आपके पेपर में 6 या 6 से ज्यादा ऑथर है और वो सारे different other organizations हैं, you will have higher chances to getting cited. Character, अगर आपके पेपर की total characters including space, including references, it should be 35,000. पेपर में कम से कम 6 फिगर होने चाहिए ऑफ बेटर क्वालिटी, कम से कम 2 टेबल हों और इक्वेशंस हों. So normally these are some of the features, some of the character which, if your paper will have these parameters, so there will be high chances of getting citation or more citations might be possible. These will increase the chances of getting citations. No, so citation was one of the, and now because citation is important thing, so you will see almost all the parameters, all the research matrices are based on the citation only. So first one is H index. Now what is H index? H index is a matrix which normally we use both for productivity and citation impact of research publications.
सिंपल डेफिनेशन मैं बता रहा हूं आपको एच इंडेक्स का। एच इंडेक्स का सिंपल डेफिनेशन ये है कि n नंबर ऑफ पेपर हैविंग n नंबर ऑफ साइटेशन इज कॉल्ड एज एच इंडेक्स, और h नंबर ऑफ पेपर हैविंग h नंबर ऑफ साइटेशन इज एच इंडेक्स। आप लिखना चाहें लिख लीजिए। n number of paper having n number of citation is h index. Who gave this definition or h index? The scientist whose name was Hirsch. He was first defined h index. So for example, अब थोड़ा ध्यान से देखिएगा क्योंकि ये सब आपको जरूरत है। एच इंडेक्स, इम्पैक्ट फैक्टर, साइट स्कोर, 3 इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स है जो आपको जानना चाहिए। सो इफ ए रिसर्चर हैज 15 पेपर, 15 पेपर, अगर मैंने 15 पेपर पब्लिश किया तो मेरा मैक्सिमम एच इंडेक्स जो पॉसिबल है वो 15 ही होगा। मेरा एच इंडेक्स 15 पेपर वाले का कभी एच इंडेक्स 16 नहीं हो सकता। अगर मैंने 10 पेपर पब्लिश किया तो मेरा मैक्सिमम एच इंडेक्स जो हो सकता है वो 10 ही हो सकता है, 11 नहीं हो सकता। ठीक है। अब किसी ने अगर 15 पेपर पब्लिश किया है तो इफ हिज एच इंडेक्स इज 8, इट मींस उसके 8 पेपर के कम से कम 8 साइटेशंस हैं। सो जैसे एग्जांपल अब मैं देता हूं आपको। अब फॉर एग्जांपल इन दिस केस दिस ऑथर हैज पब्लिश 7 आर्टिकल, इट मींस इनका मैक्सिमम पॉसिबल एच इंडेक्स कितना होगा? क्योंकि 7 पेपर है तो 7 ही हो सकता है, 8 हो नहीं सकता। ठीक है। अब इनके दीज आर द डिफरेंट साइटेशन फॉर डिफरेंट पेपर। पहला पेपर का साइटेशन 33 है, दूसरे पेपर का साइटेशन 12 है, तीसरे का 6 है, चौथे का 18 है, पांचवें का 7 है, छठे का 0 है, सातवें का 5 है। तो 7 आर्टिकल इन्होंने पब्लिश किया है। दीज आर द टोटल, अगर मैं देखूं टोटल नंबर ऑफ साइटेशन तो आप इनको ऐड कर लीजिए तो एक पैरामीटर मैट्रिक्स आपको मिल जाएगा, टोटल नंबर ऑफ साइटेशन कितना हुआ इनको। ठीक है। दूसरा एक हम निकलते हैं साइटेशन पर पेपर, तो टोटल साइटेशन ऐड कर लीजिए, उसको 7 से डिवाइड कर दीजिए, आपको टोटल साइटेशन पर पेपर मिल जाएगा। ठीक है। ये सब अलग अलग मैट्रिक्स है। अब मुझे चूंकि मैं एच इंडेक्स की बात कर रहा हूँ, एच इंडेक्स कैसे कैलकुलेट करते हैं? So maximum possible H index in this case is 7 because this is having 7 number of article. ठीक है। 7 H इंडेक्स के लिए क्या होना चाहिए? सातों पेपर के कम से कम 7 साइटेशन होने चाहिए। For 7, all the 7 paper must have 7 citations. Okay. बट इस केस में हर एक पेपर का 7 साइटेशन नहीं है। जैसे इस पेपर का 7 साइटेशन नहीं है, इसका 7 साइटेशन नहीं है, इसका 7 साइटेशन नहीं है, तो 7 एच इंडेक्स नहीं होगा। ये आसान तरीका क्या है? इस पेपर को सबसे पहले हम अरेंज कर लेते हैं साइटेशन के हिसाब से डिक्रीजिंग ऑर्डर में, ऊपर से नीचे की तरफ डिक्रीजिंग ऑर्डर में साइटेशन को अरेंज कर लेते हैं। तो अब यहाँ देखिए साइटेशन ऑलरेडी हमने अरेंज कर लिया है, 33, 18, 12, 7, 6, 5, 7। ठीक है। तो साइटेशन को सबसे पहला काम है कि आप अरेंज कर लीजिए ऊपर से मैक्सिमम हाईएस्ट साइटेशन ऊपर, उसके बाद धीरे धीरे नीचे की तरफ डिक्रीजिंग ऑर्डर में। अब मैंने बोला 7 एच इंडेक्स के लिए कम से कम हर एक पेपर का 7 साइटेशन होना चाहिए, जो नहीं है तो 6 एच इंडेक्स देख लेते हैं। 6 होने के लिए क्या चाहिए? 6 पेपर का कम से कम 6 साइटेशन होना चाहिए। तो कैन एनीवन विल टेल मी डज दिस ऑथर हैविंग 6 साइटेशन ऑफ 6 पेपर? इस ऑथर के 6 पेपर के 6 साइटेशन है या नहीं है? नो सर। हर एक 6 पेपर नहीं है जिनके 6 साइटेशन हो, तो 6 एच इंडेक्स भी नहीं है। 5 एच इंडेक्स हम पॉसिबल देखते हैं, 5 है कि नहीं है। 5 के लिए क्या पॉसिबिलिटी होना चाहिए? अगर इसका एच इंडेक्स 5 है तो 5 पेपर के 5 साइटेशन होने चाहिए, कम से कम 5 या 5 से ज्यादा। तो है, ऐसा है? हाँ है। यस सर। हाँ, तो इसका तो इस मीन्स इसका एच इंडेक्स 5 है। ठीक है। So does all the 7 paper have Sir, 7 I or have more one citation? doubt. Excuse me, Yes. sir. If Yes. 7th paper ka instead of the 0, 1 या 2 होता, then what will be the H index then? इसका साइटेशन अगर 6 भी होता ना, मान लीजिए हम 6 लिख देते हैं। ठीक है। तो क्या क्या होता है जब हम इंक्रीजिंग ऑर्डर में सजाते हैं तो इसको ये 6 यहाँ आ जाता है और 5 नीचे आ जाता है। करेक्ट करेक्ट। Yes. तो आप बताइए इसका एच इंडेक्स कितना होता है? 7 तो नहीं होता, क्योंकि 7 नहीं होता, क्योंकि सातों पेपर के 7
साइटेशन होने चाहिए था। यस, तो वो होता कि नहीं होता? 6 पेपर, यस सर, हो जाता हो अगर जाता ये तब, हाँ, तब एच इंडेक्स 6 हो जाता। ओके, गॉट, यस सर। ठीक है, Means total number of citation divided by नहीं, टोटल नंबर ऑफ साइटेशन डिवाइडेड बाय नहीं, वो मैंने बोला था। एक हमने पैरामीटर जब बात किए थे, एक सेकेंड, तो वहां पे हमने बात किया था साइटेशन पर पेपर। आप यहां देखेंगे एवरेज साइटेशन पर पब्लिकेशन। इसके लिए हमने बोला था कि आप टोटल साइटेशन को ऐड कर लीजिए एंड डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ पेपर। साइटेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ आर्टिकल पब्लिकेशन, तो ये हो जाएगा Okay, आपको, okay. यू विल गेट दिस वैल्यू। ठीक है, इज इट क्लियर? Yes, yes. हाँ, मैं एच इंडेक्स की बात कर रहा था। एच इंडेक्स देख लेते हैं। सर एक क्वेरी था। हाँ, बताइए। जैसे गूगल स्कॉलर में नॉर्मल एच इंडेक्स भी होता है, वैसे I10 इंडेक्स होता है कुछ, तो एग्जैक्टली क्या होता है? मैं आता हूँ, मैं एक एक करके सारा मतलब जो इम्पोर्टेंट मैट्रिक्स है ना, वो बात करते हैं। ओके ओके सर। सो एच इंडेक्स आप यहाँ तक क्लियर है, राइट? यस सर। सो मेरे नॉर्मली हम एच इंडेक्स कहाँ से निकालते हैं? तो 3 इंपॉर्टेंट डाटाबेसेस हैं जो हमें एच इंडेक्स की वैल्यू देते हैं। पहला सबसे इंपॉर्टेंट स्कोपस, दूसरा वेब ऑफ साइंस एंड तीसरा गूगल स्कॉलर। ठीक है, अब जैसे ये मैंने स्क्रीनशॉट लगाया है गूगल स्कॉलर का। ठीक है, अब गूगल स्कॉलर को जैसे ही आप ओपन करेंगे ना, तो ऑटोमेटिकली आपको एच इंडेक्स दिखना शुरू हो जाएगा। ये आप इस वैल्यू को छोड़ दीजिए, ये 2020 के बाद का वैल्यू है। ये हम ऑल वाले पे देखेंगे तो ऑटोमेटिकली एच इंडेक्स कैलकुलेट करके आपको देते हैं। ठीक है, मैं आपको वो दिखा देता हूँ कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो दिस इज टोटल नंबर ऑफ साइटेशंस। ये I10 इंडेक्स है। I10 इंडेक्स क्या होता है? फॉर एनी ऑथर द टोटल नंबर ऑफ पेपर जिनकी साइटेशन 10 या 10 से ज्यादा है, उसको हम बोलते हैं I10 इंडेक्स। जैसे इसी ऑथर में अगर मुझे I10 इंडेक्स निकालना होता तो मुझे कितने पेपर है जिनकी साइटेशन 10 या 10 से ज्यादा है? 3। तो इनकी Three. I10 इंडेक्स 3 होती। और I10 इंडेक्स डायरेक्टली सिर्फ गूगल स्कॉलर देते हैं और कोई डाटाबेस नहीं देता है डायरेक्टली, आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा अलग से। तो दिस इज स्क्रीनशॉट ऑफ गूगल स्कॉलर। मैं डायरेक्टली आपको वेबसाइट पे भी ले जाऊंगा, तब आपको दिखाता हूँ किसी और का भी करके। अगेन इफ यू गो टू स्कोपस प्रोफाइल, स्कोपस पे भी आपको टोटल साइटेशन दिखते हैं, टोटल नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट दिखते हैं, कितने पब्लिकेशन किए हैं, और एच इंडेक्स दिखते हैं आपको। ठीक है, मैं भी आपको करके दिखा देता हूँ। सिमिलरली दिस इज वेब ऑफ साइंस, जहां पे आपको एच इंडेक्स, टोटल नंबर ऑफ पब्लिकेशन एंड टोटल नंबर ऑफ साइटेशन दिखाता है डायरेक्टली। ठीक है, तो ये सब जब आप आपका अकाउंट बना लेंगे ना, तो आपको आपके अगर पब्लिकेशन होंगे तो डायरेक्टली आपके अकाउंट में आपके पेपर आ जाएंगे। तो और फिर ये चीज क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ये इज इट विजिबल? Yes. सो दिस इज गूगल स्कॉलर, जहां पे आप माय प्रोफाइल पे आएंगे, ऑटोमेटिकली यहाँ पे हम जाएंगे तो मेरा माय प्रोफाइल दिखता है। माय प्रोफाइल पे क्लिक कीजिए तो यू विल सी एच इंडेक्स। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ साइटेशंस एंड I10 इंडेक्स। अब I10 इंडेक्स ये साइटेशन है, अभी ये इंक्रीज मतलब अरेंज है बाय डिक्रीजिंग साइटेशंस। अब एक पेज पे रफली गूगल स्कॉलर 20 पेपर देते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है ना 1 से 20 आर्टिकल। मान लीजिए फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे हाईलाइट कर दिया, तो मुझे पता है कि ये 20वां आर्टिकल है। 21, 22। अब एक से उससे पहले देख लीजिए मेरा एच इंडेक्स कितना है? 28। ठीक है, तो मेरे 28 पेपर के साइटेशंस कम से कम 28 या 28 से ज्यादा होने चाहिए। इज इट क्लियर? अगर मेरा एच इंडेक्स 28 है तो मेरे 28 पेपर के साइटेशंस 28 या 28, 28 या 28 से ज्यादा होने चाहिए। करेक्ट? यस सर। Yes, sir. यस। तो हमने अभी कैलकुलेट किया था, एक सेकेंड,
अब इसको आप गूगल स्कॉलर को अरेंज कर सकते हैं। ये साइटेशन के अरेंज अभी है डिक्रीजिंग ऑर्डर में साइटेशन, जो आपको मैनुअली नहीं करना है। तो ये 20वां आर्टिकल है, 20th आर्टिकल, बिकॉज एक पेज में 1 से 20 तक दिखते हैं। ये 21वां आर्टिकल, 22वां, 23rd, 24th, 25th, 26th, 27th, 28th। अब ये 28th आर्टिकल है। तो यहां तक के आर्टिकल का अगर आप साइटेशन देखेंगे, जो 28th आर्टिकल का साइटेशन कितना है, 29। तो 28 पेपर ऐसे हैं जिनकी साइटेशन 28 या 28 से ज्यादा है, इसीलिए मेरे एच इंडेक्स 28 है। जैसे ही इस पेपर या किसी और पेपर की साइटेशन 29 हो जाएंगे, तो ये 29th पेपर होगा मेरा, जिसकी साइटेशन 29 हो जाएगी मान लीजिए, तो मेरी एच इंडेक्स ऑटोमेटिकली इंक्रीज होकर 29 हो जाएगी। मैं आपको और एग्जांपल देता हूं एक और। ये स्कोपस है, ठीक है, जो मैंने आपको दिखाया था अभी, टोटल नंबर ऑफ साइटेशंस, एच इंडेक्स और टोटल नंबर ऑफ पेपर। अभी ये अरेंज है बाय ईयर, इसको मैं अरेंज कर देता हूं ऑन द बेसिस ऑफ हाईएस्ट साइटेशन के हिसाब से मैंने अरेंज कर दिया। तो इट विल ऑटोमेटिकली अरेंज अकॉर्डिंग टू, जस्ट गिव मी वन, एक जितना टाइम ले रहा है देने दीजिए, एक बार अरेंज हो जाने दीजिए। अभी तक समझ में आ रहा है? यस Yes, sir. Yes, sir. सर सिंपल मैं इस तरीका पेज ये पे है इसीलिए कि है जस्ट ये बंद कर दो। अभी जैसे ये पेपर है ना, जैसे मेरे जितने पेपर है मान लीजिए, मुझे मेरे अकाउंट में रफली 161 के लगभग आर्टिकल है, ठीक है। तो ये उनकी टोटल ईयर बाय साइटेशन दिख रही है मुझे एस्कोपस में। मेरे पर्टिकुलर पेपर ये 2025 में पब्लिश हुआ, तो ऑब्वियसली इसके साइटेशन 2025 में ही होंगे या 2026 में होंगे। तो अभी ये टोटल नंबर ऑफ साइटेशंस हैं। इसको मैं कैसे अरेंज कर लेता हूं, जो मैंने बोला कि हम साइटेशन जब मुझे एच इंडेक्स काउंट करना है, तो पहले मैं अरेंज कर लूंगा इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ साइटेशन। तो मैं इसको अरेंज कर लेता हूं, जो सबसे ऊपर में होगा हाईएस्ट साइटेशन वाले, ठीक है। ये लास्ट कॉलम है, ये पर्टिकुलर पेपर का, इस पर्टिकुलर पेपर का साइटेशन मुझे दिख रहा है 194, ठीक है। सेकेंड पेपर का साइटेशन है 177। आपको अगर एच इंडेक्स कैलकुलेट करना है, ये नंबर आपको दिख रहा है, अगर मुझे एच इंडेक्स 30 चाहिए, फॉर 30 एच इंडेक्स व्हाट इज द रिक्वायरमेंट, कि 30 पेपर मस्ट हैव 30 और मोर देन 30 साइटेशंस, राइट? यस सर। तो 30 एच इंडेक्स होने के लिए 30 साइटेशन होने चाहिए, जो नहीं है यहाँ पे 14 ही है। 25 पे देख लेते हैं, 25 पे। 25 के लिए क्या चाहिए मुझे, कम से कम 25 पेपर होने चाहिए जिनकी साइटेशन 25 या 25 से ज्यादा होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे है, ये 25वां पेपर है जिसकी साइटेशन सिर्फ 21 है, तो 25 एच इंडेक्स भी नहीं हुआ। 20 कितना एच इंडेक्स है, कौन कैलकुलेट करके मुझे बताएंगे इसमें, जहां ये नंबर यहां मैच करे या उससे ज्यादा हो। 24 एच इंडेक्स है या नहीं है? 24 है। कैसे 24 नहीं होने सर, के सर लिए? नहीं है, 24 होना 23 पेपर इज चाहिए। 24 23 और 24 23 के ऊपर है ना, 23 होगा एच इंडेक्स। 23 या 23 पेपर से, तो 23 एच इंडेक्स आएगा। एच इंडेक्स इज 23, वो आपको Yes, यहाँ दिख sir. जाएंगे। यहाँ पे देखिए एच इंडेक्स 23 दिख रहा है, यस यस क्लियर? सो एच Yes, इंडेक्स sir. इज इट ओके फॉर एवरीवन? Yes. कैलकुलेट कर लेंगे। सो एच Yes. इंडेक्स, दीज आर द Yes, sir. डिफरेंट यूजेज ऑफ एच इंडेक्स। हम कहाँ कहाँ यूज करते हैं, बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंस तो है नहीं, हम सिर्फ इवेलुएट करने के लिए करते हैं, अदरवाइज इसकी कुछ लिमिटेशंस भी होती है। I10 इंडेक्स मैंने ऑलरेडी बता दिया कि दिस इज द टोटल नंबर ऑफ पब्लिकेशन विथ एटलीस्ट 10 साइटेशंस, जिनकी 10 या 10 से ज्यादा साइटेशन है उसको हम I10 इंडेक्स बोलते हैं। तो जैसे इस पेपर, इसमें देखिए कि किसी ऑथर का ये नंबर ऑफ आर्टिकल है विच इज ऑलरेडी अरेंज्ड इनटू द डिक्रीजिंग ऑर्डर। तो मैं
सबसे पूछ रहा हूं, एवरीवन कैलकुलेट इट्स I10 इंडेक्स और चैट बॉक्स में लिखिए व्हाट इज इट्स I10 इंडेक्स। Sir, एक 7. सेकेंड, एक सेकेंड मैं दिखाता हूँ। इसकी I10 इंडेक्स कितनी है? 7 है सर। हाँ, बिकॉज 10 से ज्यादा 12 है सर नंबर ऑफ साइटेशन। हाँ तो 10 या 10 से ज्यादा होनी चाहिए वो सारे पेपर जिनकी साइटेशन कम से कम 10 हो, तो उसको हम बोलते हैं I10 इंडेक्स। तो इस केस में इस ऑथर की I10 इंडेक्स जो है वो 7 है। क्लियर? Yes. व्हाट इज द H इंडेक्स ऑफ दिस ऑथर? Eight. How many of you are telling 8? 8. कितनी H इंडेक्स है कौन बताएंगे? और बताइए क्यों है 8? 8 पेपर 9 साइटेशन है इसलिए। नहीं, कम से कम 8 पेपर होने चाहिए जिनकी साइटेशन 8 या 8 से ज्यादा होनी चाहिए। एंड इस अगर ये मान लीजिए पर्टिकुलर पर्सन या मेरा पेपर है, मैंने 10 पेपर पब्लिश किया जिनकी साइटेशन इतनी इतनी है, तो मेरी मैक्सिमम H इंडेक्स कितनी पॉसिबल है? अगर मैं आपको साइटेशन ना दिखाऊं, ये मैं आपको ये वैल्यू नहीं दिखा रहा हूं, मैं बोल रहा हूं कि मैंने 10 आर्टिकल पब्लिश किया है, तो मेरी मैक्सिमम H इंडेक्स कितनी हो सकती है? 10। 10। अगर मैंने 10 आर्टिकल पब्लिश किया तो मेरी H इंडेक्स कभी भी 11 नहीं होगी, 10 ही होगी या 10 से कम होगी। ठीक है, तो दैट इज वन लिमिटेशन। अब जब मैं साइटेशन देख रहा हूं तो मुझे 10 H इंडेक्स के लिए कम से कम 10 पेपर चाहिए और हर एक पेपर की साइटेशन 10 या 10 से ज्यादा होनी चाहिए, जो नहीं है। 9 H इंडेक्स होने के लिए 9 पेपर चाहिए जिनकी साइटेशन 9 या 9 से ज्यादा हो, वो भी नहीं है। 8 होने के लिए 8 पेपर चाहिए जिसकी साइटेशन 8 या 8 से ज्यादा होनी चाहिए, जो अवेलेबल है। तो इसीलिए इस ऑथर की H इंडेक्स 8 है। So I10 index of this author is 7 and H index is 8. Clear? ठीक है? Sir, इस I केस have में a मुझे question. Yes, please. You showed your profile. Why in Google Scholar and Scopus there are different is H हाँ, index values? because I have published some of the article which is not Scopus indexed. तो गूगल स्कॉलर में आपके सारे इंफॉर्मेशन आ जाते हैं, जो स्कोपस इंडेक्स नहीं भी है वो भी दिखते हैं, तो इसीलिए वहां थोड़े ज्यादा वैल्यू होते हैं जबकि स्कोपस में कम वैल्यू होते हैं। Okay, sir. ठीक है, अब ये किसी और का है, इसका मुझे बताएंगे I10 इंडेक्स। सबसे आसान है 5. 5, बिकॉज 5 आर्टिकल हैं जिनकी ये 5 आर्टिकल है जिनकी साइटेशन 10 या 10 से ज्यादा है। H इंडेक्स 6, बिकॉज 6 पेपर है जिनकी हाँ 6, बिकॉज 6 पेपर है जिनकी साइटेशन 6 या 6 से ज्यादा है। सो H index is 6 and I10 index is 5. Now next parameter 7 is आएंगे शायद। नहीं, how 7? Please tell me. 6 7th वाला। हाँ राइट, बताइए। करेक्ट। no करेक्ट सर। 7 नहीं होंगे ना? नहीं है। हाँ, so next parameter is impact factor. अब impact factor क्या है? ये citation based metric है जो citation पे डिपेंड करता है। सो इम्पैक्ट फैक्टर, और इसको हम दो तरीके से बोलते हैं, इधर इम्पैक्ट फैक्टर भी बोलते हैं और जर्नल इम्पैक्ट फैक्टर भी बोलते हैं। इट इज एन एकेडमिक, फॉर एन एकेडमिक जर्नल्स ये साल में एक बार कैलकुलेट होता है। अब मैंने 2 डाटाबेस के नाम बताए थे आपको, एक स्कोपस एंड दूसरा वेब ऑफ साइंस, करेक्ट? सो इम्पैक्ट फैक्टर इज गिवन ओनली बाय WOS, वेब ऑफ साइंस। स्कोपस कभी भी इम्पैक्ट फैक्टर नहीं देता। अगर आपके पास कोई जर्नल है जो सिर्फ स्कोपस में है तो उसका इम्पैक्ट फैक्टर नहीं होगा। इम्पैक्ट फैक्टर सिर्फ उसी जर्नल का होगा जो वेब ऑफ साइंस में इंडेक्स्ड होगा।
क्योंकि ये वेब ऑफ साइंस ही देता है। ठीक है, Scopus will not give impact factors. Huh? नो, स्कोपस नेवर गिव्स इम्पैक्ट फैक्टर। स्कोपस Okay. गिव्स, स्कोपस देता है साइट स्कोर, सिमिलर टाइप का वैल्यू है, वो मैं बताता हूँ आगे। वो देता है इज गिवन बाय वेब ऑफ साइंस एंड साइट स्कोर इज गिवन बाय स्कोपस। या तो ये याद रखेंगे। Yes. Now how we are going to calculate it? It is a ratio between the citation and the published paper. अब फॉर्मूला क्या है? व्हाट इज द फॉर्मूला? ये फॉर्मूला आप नोट कर लीजिए। नंबर ऑफ साइटेशंस, मैं 2026 में हूँ, सिंपल फॉर्मूला है, नंबर ऑफ साइटेशन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल। कौन सा साइटेशन, कौन से आर्टिकल जो पिछले 2 साल में पब्लिश हुए होंगे। क्लियर? Yes, sir. अब एक एग्जांपल हम लेते हैं कि मुझे इम्पैक्ट फैक्टर किसी जर्नल का कैलकुलेट करना 2025 का, तो मुझे कौन से 2 ईयर का साइटेशन चाहिए, कौन से ईयर, मतलब कौन से ईयर का आर्टिकल हम कंसीडर करेंगे? पिछले 2 साल का, 23, 24, 23, 23 23, 24, 25. तो वो आर्टिकल जो 2023 में पब्लिश हुए हैं और वो आर्टिकल जो 2024 में पब्लिश हुए, उनकी साइटेशंस डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल पब्लिश्ड इन दी 2023 एंड 2024। फॉर एग्जांपल, ये के वैल्यू दिया हुआ है हमने कि टोटल नंबर ऑफ पेपर पब्लिश्ड इन 2023 is 250, टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल पेपर पब्लिश्ड इन 2024 is 250। साइटेशन जो 2023 वाले आर्टिकल है उनका साइटेशन इतना हुआ है, जो 2024 का आर्टिकल है उनकी साइटेशन इतनी हुई है। तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? 1050 प्लस 1100, सो इम्पैक्ट फैक्टर इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ साइटेशन रिसीव्ड डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ पेपर। जब इसको डिवाइड करेंगे तो यू विल गेट द इम्पैक्ट फैक्टर इन द ईयर ऑफ 2025। और ये साल में एक ही बार कैलकुलेट होता है और थ्रू आउट द ईयर हम यूज करते हैं। इज इट क्लियर? इम्पैक्ट फैक्टर। Yes. फिर अगर नेक्स्ट ईयर का करना रहा तो वो 24, 25 का लेगा, मींस 26 का करना रहा। हाँ 26 में कैलकुलेट करेंगे तो 25, 24 का कैलकुलेट करेंगे, लेंगे वैल्यू। Okay. ठीक है, ये सबके लिए दिस इज ओके फॉर एवरीवन? Yes. Sir, is there any reason we only consider 2 years? No. This is a formula given by those who have discovered this impact factor. ये कौन किए थे? एक साइंटिस्ट हैं यूजिन गैरफील्ड, जिन्होंने ये फॉर्मूला दिया, हु इज द फाउंडर ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ साइंटिफिक इंफॉर्मेशन। इन्होंने ही इम्पैक्ट फैक्टर वैल्यू दिया था इवैल्यूएट करने के लिए। मैं आता हूँ साइट स्कोर पे। अब फिर आपको पता चलेगा साइट स्कोर क्यों अच्छा है, या और इम्पैक्ट फैक्टर क्यों, मतलब कौन सा अच्छा है और क्यों अच्छा है। सर मेरा एक क्वेश्चन है, इम्पैक्ट फैक्टर जर्नल का चेंज होता रहता है। मैंने सपोज 2020 में पेपर पब्लिश किया, अब मुझे कहीं सीवी में दिखाना है 2025 में, तो मैं कौन सा इम्पैक्ट फैक्टर दिखाऊंगी उस जर्नल का जो मेरे टाइम 2020 में था, जो प्रेजेंटली 2025 मान लीजिए में? मैम मेरे पास $1 है, ठीक है, $100 है। तो मैंने पिछले 50 साल से रखा हुआ है, 25 साल से रखा हुआ है, कितने बहुत पुराने समय से रखा हुआ है। उस डॉलर की मेरे पास किसी ने पूछा कि मेरे पास कितनी डॉलर की वैल्यू क्या है, तो मैं 25 साल पुराना वैल्यू बताऊंगा कि आज का वैल्यू बताऊंगा? सर आज का वैल्यू तो डेफिनेटली। इम्पैक्ट फैक्टर भी मुझे आज का यूज करना चाहिए। श्योर। और हो सकता है उस समय जब मैंने पब्लिश किया तो उसका इम्पैक्ट फैक्टर बहुत अच्छा था, बट राइट नाउ वो बिल्कुल 0 हो गया, या आज उसकी कोई वैल्यू नहीं है, देन तो मेरे पेपर की कोई वैल्यू नहीं। नहीं होगी। आपको पॉइंट्स मिल जाएंगे, क्योंकि जब आपने पब्लिश किया तब वो इंडेक्स था या इम्पैक्ट फैक्टर थे, लेकिन आप दोनों हाथ में लड्डू नहीं ले सकते ना, कि जिस पेपर का बढ़ गया वहां बढ़ा वाला यूज कीजिए, जहां घट गया वहां पुराना यूज कर लेंगे, ऐसा नहीं होगा ना। यस सर।
सो ये है कि जितने ज्यादा ऊपर इम्पैक्ट फैक्टर वाले जब पेपर देखेंगे वहां नंबर ऑफ जर्नल्स कम होते जाते हैं। अगर आप देखेंगे ये 10 इम्पैक्ट फैक्टर या 10 से ज्यादा इम्पैक्ट फैक्टर वाले सिर्फ 244 जर्नल है, 244 जर्नल्स थे 2018-19 में। तो कम इम्पैक्ट फैक्टर वाले जर्नल ज्यादा होते हैं। धीरे धीरे जैसे आप ऊपर की क्वालिटी में जाएंगे तो आपको जर्नल के अमाउंट नंबर घटते जाएंगे, तो वहां पब्लिश करना थोड़ा ज्यादा टफ हो जाता है क्योंकि उनकी स्टैंडर्ड थोड़ी ऊपर हो जाती है। सर इम्पैक्ट फैक्टर क्या डिक्रीज भी होता है? हाँ, क्यों ना डिक्रीज होगा? अगर साइटेशन घट गए, मैंने अगर ये इम्पैक्ट फैक्टर कैसे डिक्रीज होगा? अगर ऊपर वाला वैल्यू घट गया, ठीक है, ये वैल्यू तो ये वैल्यू कम हो जाए, या ये आपने बहुत ज्यादा पेपर पब्लिश करना शुरू कर दिया, किसी जर्नल ने बहुत पेपर पब्लिश करना शुरू कर दिया, उस हिसाब से साइटेशन नहीं बढ़े तो उनकी इम्पैक्ट फैक्टर घट जाएगी। या उनकी पेपर की काउंट उतने ही रहे लेकिन साइटेशन कम हो गया तो भी इम्पैक्ट फैक्टर घट जाएंगे। तो सारा खेल ना साइटेशंस के हैं, ठीक है। अब दूसरा वैल्यू है जो साइट स्कोर। एससीआई जर्नल का वेब ऑफ साइंस का अलग अलग होता है क्या? एससीआई जर्नल मतलब साइंस साइटेशन इंडेक्स उसको बोलते हैं, जो मैंने कल आपको 3 डाटाबेस दिखाए थे वेब ऑफ साइंस में। यस जी, सो करेक्ट। एक साइंस वाला था जिसको हम एससीआई बोलते हैं, यस, एससीआई और एससीआई बोलते हैं। दूसरा एएचसीआई होता है, आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज। राइट। तीसरा एक सोशल साइंस का होता है, जी, ठीक है। तो वो वेब ऑफ साइंस इंडेक्स जर्नल हुआ। दूसरा पैरामीटर मेरे पास है, मैट्रिक्स है, जिसको हम बोलते हैं साइट स्कोर। ये हम बहुत ज्यादा चर्चा नहीं करते हैं, इम्पैक्ट फैक्टर की चर्चा ज्यादा करते हैं, साइट स्कोर की चर्चा नहीं करते हैं। ये ऑलमोस्ट सिमिलर टाइप ऑफ वैल्यू है, इम्पैक्ट फैक्टर की जैसा ही वैल्यू है, बट ये स्कोपस देता है, स्कोपस कैलकुलेट करता है, ठीक है। और ये मंथ, हर एक मंथ में कैलकुलेट होता है, मंथ वाइज चेंज होते हैं। क्यों मंथ वाइज चेंज होते हैं मैं आपको भी बताता हूँ। अगर इसका फॉर्मूला लेंगे, अगर मुझे 2025 का साइट स्कोर कैलकुलेट करना है तो मुझे 4 साल का वैल्यू चाहिए, 4 इयर्स का वैल्यू। उस 4 ईयर में एक साल तो वो होगा जिस ईयर में मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ, मतलब 2025 तो मुझे कंसीडर करना ही करना है, ठीक है। इसके अलावा पिछला 3 साल लूंगा। साइट स्कोर कैलकुलेट करने के लिए मुझे साइटेशन चाहिए, कब का? 4 साल का। 4 साल में पहला ये 1 साल तो 2025 होगा क्योंकि 25 में मैं कैलकुलेट करने वाला हूं, और पिछला 3 साल। तो आप यहां देखेंगे साइटेशन इन 2025 फॉर द आर्टिकल पब्लिश्ड इन 25, 24, 23, 4 साल, 22, 23, 24, 25 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ पेपर पब्लिश्ड इन दिस 4 ईयर्स। यहाँ पे 25 मिस हो गया है, या 25 भी होगा। So total number of citations in previous 4 years, including this year, when we are calculating, divided by the total number of paper published. अब जैसे यहाँ देखिए, ये स्कोपस का हमने स्क्रीनशॉट लगाया, मैं स्कोपस के वेबसाइट पे भी जाके आपको दिखाता हूँ। साइट स्कोर 2024 का अगर आप कैलकुलेट करेंगे यहाँ पे, तो मैंने बोला पिछला 4 साल का वैल्यू चाहिए इंक्लूडिंग 2024। तो यहाँ देखिए 21, 22, 23 और 24 का साइटेशंस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ आर्टिकल पब्लिश्ड इन 2021, 2022, 2023, 2024। तो अगेन यहां भी वही फॉर्मूला है, साइटेशन नंबर ऑफ आर्टिकल। 4 साल का वैल्यू लेता हूं, 3 साल पुराना करंट वाला ईयर। और उसी वेबसाइट स्कोर आप देखेंगे एक चीज लिखा हुआ है कि लास्ट अपडेटेड ऑन 5 अगस्त 2025। ये हर एक मंथ अपडेट होते हैं। डिफरेंस समझ में आया? बेसिक डिफरेंस, इम्पैक्ट फैक्टर एंड साइट स्कोर सेम वैल्यू, सेम फॉर्मूला पे कैलकुलेट होते हैं। साइटेशन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल, ओनली द ड्यूरेशन इज चेंजिंग। इम्पैक्ट फैक्टर में आज मैं कैलकुलेट कर रहा हूं 2026 में, तो मैं 25 और 24 का वैल्यू लूंगा, और साइट स्कोर में अगर मैं 26 में कैलकुलेट कर रहा हूं तो मैं 26, 25, 24 और 23 का वैल्यू लूंगा। सर अगर ये मंथली अपडेट होते हैं तो लास्ट अपडेट इसमें दिसंबर 2025 या जनवरी 2026 नहीं होना चाहिए? मैम ये स्क्रीनशॉट है ना, ये मैंने वेबसाइट पे भी नहीं हूँ। यस सर, दिस इज स्क्रीनशॉट। मैं भी वेबसाइट पे जाता हूँ, मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे लिखा हुआ है ना अपडेटेड मंथली। एक सेकेंड,
मैं अभी वेबसाइट पे था नहीं, अभी मैं इस पे था। मान लीजिए मैं सोर्स पे चल गया, ये स्कोपस का वेबसाइट है, जस्ट मुझे चलिए साइन इन नहीं हो रहा, मैं इसे देख लेता हूँ। चलिए अभी नहीं काम कर रहा, थोड़ी देर में मैं देख लेता हूँ, जब तक हम जाएंगे उससे पहले हम एक बार चेक कर लेंगे, ठीक है। थोड़े ऐसे जर्नल देखो हैं जो स्कोपस इंडेक्स बोलते हैं लेकिन साइटेशन ये इम्पैक्ट फैक्टर भी देते हैं, तो वो क्या होता है? हाँ, कोई जर्नल ऐसा होगा जो स्कोपस में भी होगा और वेब ऑफ साइंस में भी इंडेक्स होगा, दोनों जगह इंडेक्स होगा। अच्छा, इफ यू हैव कोई ऐसा जर्नल है जो वेब ऑफ साइंस में भी इंडेक्स है और स्कोपस में भी इंडेक्स है, तो उनके इम्पैक्ट फैक्टर भी होंगे और साइट स्कोर भी होंगे। ओके अगर वो सिर्फ वेब ऑफ साइंस में इंडेक्स है तो उनके सिर्फ इम्पैक्ट फैक्टर होंगे, फिर साइट स्कोर नहीं होगा। ओके अगर कोई जर्नल सिर्फ स्कोपस में है, वेब ऑफ साइंस में नहीं है, तो उनका सिर्फ साइट स्कोर होगा, इम्पैक्ट फैक्टर नहीं होगा। ओके। अगर कोई ऐसा जर्नल है जो वेब ऑफ साइंस में भी नहीं है बट इट इज गिविंग द इम्पैक्ट फैक्टर, तो वो कैसा नहीं होगा? नहीं, वो नहीं गलत रहेगा, वो आपको फ्रॉड है। गलत वो आपको हाँ फ्रॉड हाँ है। मैं आपको दिखाता हूँ आपको। जी, कल मैंने एक लिस्ट दिखाया था, बेल्स लिस्ट। राइट, करेक्ट। इस वेबसाइट पे जाएंगे, इम्पैक्ट फैक्टर देने वाले, इम्पैक्ट फैक्टर सिर्फ एक ही एजेंसी देती है, वेब ऑफ साइंस। बट आपके पास बहुत सारे ऐसे एजेंसी हैं जो बोलती है कि मैं इम्पैक्ट फैक्टर देता हूं। इसी वेबसाइट पे यहाँ पे जाएंगे, मिसलीडिंग मैट्रिक्स, जो आपको गलत इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। आप देखिए इम्पैक्ट फैक्टर के नाम से कितने एजेंसी हैं जो बोलते हैं कि मैं इम्पैक्ट फैक्टर देता हूं। ये भी एक इम्पैक्ट फैक्टर देता है, ये भी इम्पैक्ट फैक्टर है, ये भी इम्पैक्ट फैक्टर है, ये भी इम्पैक्ट फैक्टर। दीज आर ऑल इम्पैक्ट फैक्टर गिविंग एजेंसीज, जो रॉन्ग एजेंसीज है, गलत एजेंसी है, जो मिसलीड करते हैं, ठीक है। अब कल हमने एक जर्नल देखा था, इट वाज ऑजियम। Prof, misleading means they are also not correct. They are not correct, they are wrong. If any journal is telling you, Yeah. Yesterday we have seen some of the journal, like Yes, UGC, yes, yes. Audium journal. They have Yes. written that their impact factor is 5.6. Okay. Like if you'll see here, and we have gone to Adalia journal. This is journal in group 2. This is the wrong. So if you will see here, they are telling that their impact factor is 5.3. This impact factor might have been given by some of these agencies, not from Web of Science, because this journal is not Web of Science. Okay. This journal is not Web of Okay. Science. सर जैसे ये इंडेक्स कॉपरनिकस इंडेक्स है, ये सब फेक ही है, क्योंकि अभी तक हम इन्हें देख के पेपर पब्लिश कर रहे थे। आप स्कोपस और वेब ऑफ साइंस, either go for स्कोपस और go for वेब ऑफ साइंस। So now, meaning the misleading, meaning all the impact factor is a wrong impact factor. Yes, They will yes, mislead yes, people. yes, Okay. yes. If any journal is telling that they are having index Copernicus, Yes, so yes. this will not give you any kind of benefit at any means any position of your career, neither Okay. API score nor benefits of anything. You will not get any benefit. Yes, I used to have a lot of email from this Copernicus. They will send me that I should edit. So what I have never replied. Don't do it. Don't. No, Okay. it will not give you any kind of benefit. Thank you very much, Prof. If a Scopus will work, then I'll show you some. It's not working. Let me. Okay, I will try it after some time. We are. So this is site score, which is updated every month, and that value will be given. So if I am going to calculate for 2025, means I have to take this citation for 4 years: 2025, 2024, 2023, and 2022. Similarly, this document will be for 4 years, including 2025. Now, if you are going to calculate, means compare site score versus the impact factor.
So this is just a comparison of both site score. Above this line, we are having value for site score, and below we are having impact factor. Impact factor is given by WOS, Web of Science. Site score is given by Scopus. When you are going to calculate Web of impact factor, you considers, if you are in 2025 and calculating the impact factor for 2025, so you considers 2023 and 2024. And remember one more thing. If you want to calculate impact factor, so we are not going to consider all types of article. We are going to consider only original research articles and the review paper. No book chapter, no conference papers, because individual ka impact factor we don't have. So for any journals, if they are publishing only article and review of papers, will be taken into consideration for calculation of their impact factor. Similarly, for site score, all types of article are not going to be considered. Only 6 different types of article are going to be considered. These are articles, review, letters, notes, editorial, and conference proceeding. So this basic difference, you should remember what is the basic difference between the site score as well as the impact factor. Both are citation-based metrics. Both are calculated on the basis of citations. If citation will increase, their impact factor as well as the site score will increase. If citation will decrease, there both the parameters will decrease. So Scopus will take notes also, So why right? Scopus is considered? Pardon, your So- voice is breaking, ma'am. Why Scopus is considering 3 years and WebOS is considering their own No, policy, something no. else? No, this is not why they are taking it like that. No? For site score calculation, they consider 4-year value. That is the formula. This is the formula given by for site score calculation. So Web of Science will only consider this article and reviews. That's it. Review paper for impact factor The calculation. citation will take notes also, letters also. Yeah, 6 different type of articles. 6 publication. different. Okay. Okay. If you So- are publishing means a book chapter in So Scopus, for you it will be benefit, because for you individual impact factor you don't have. So, but for if any, like for example, yesterday we were talking about the 13-14 different type of publications. We had one of the publication was the commentary. Okay. If we yesterday we were talking about the primary literature, secondary literature, tertiary literature. In that one, yes. In secondary literatures, I was talking about the commentary, perspective, those things. If I have published commentary in any journal, it is not going to affect the impact factor of a journal, because that is not going to be taken into consideration. Whatever citation that commentary will have, but it is not going to change their impact factor, because that will not be considered. Okay. Clear? Okay. Yes, clear. So simple formula we are having for site score and the impact factor. Site score and impact factor is citation divided by the total number of articles. Only duration you have to remember. For impact factor, previous 2 years. For site score, 4 years, including the year in which you are, or for which you are going to calculate. 5 year in impact factor we are not considering the current year. No. Yes. Okay. In site score we are considering the current year also. Yes. Impact factor does not change month wise. It is once in a year it will be calculated, and throughout the year we are using it. Site score, because we in site score, if you say, because we are taking month wise data, so throughout the year it is going to vary. Because every month, like in 2025, if you are in 2020, if you are in January, you have less number of articles. If you go February, article count, citation count will increase, so it will change. March it will increase. So every month the site score is going to vary. 5 year impact factor is exactly similar things. Only thing is we are going to consider the previous 5 year value rather than 2 years. So that is called as 5 year impact factor.
So if you are going to calculate for 2024, so previous 5 years value you will take for citations as well as the number of articles. But this is not of too much of significance. Some papers talk about the 5-year impact factor, otherwise it's of no use. Like, see, this is one of the journals who claims that their 4-year means normal impact factor. This is normal impact factor means this is a 2-year impact factor is 4.1 and 5-year impact factor was 4.3. If you'll go to Taylor and Francis, they gave you this type of value, this type of matrices. This is their impact factor. This is their 5-year impact factor. This is their site score. This is SNP and SJR. We don't calculation of SNP and SJR. It is of no use. So impact factor, site score, H index is important for us. Clear? Is it okay? Yes. So this is how we are going to calculate for 5-year impact factor. We will take the consideration of 5 years value and then divide it and do it. Now this not too much significance for you. Only thing is, yesterday we were talking about today we were talking about the citation. Citation count is important, but who cites, that is more important. If my paper, I'm a biochemist, and if my paper is going to be cited by a education department paper, it is not going to help me. It is not significant, that much significant. If someone else is, my colleague is there, whose paper has been cited by the biochemistry department only, a biochemistry paper only. So his paper will have more FWCI. So citation plus who is going to cite you. That is called as a field weighted citation index. Citation by the specific or relevant field. On an average, we can consider that FWCI should be 1. This is the normal expectation. But if FWCI is more than 1, that is very good. If FWCI is less than 1, you need to improve. It should be improved. See, these are the 2 examples I have given you for FWCI. This is one of the book chapter. This is one of the paper. If you will see, in both the cases, only one citation is there. For this one also and for this one also. Both paper having only one citation. But if you will see this book chapter, FWCI is 10.83. This citation FWCI is 0.92. दोनों का citation एक ही है. Citation के count बराबर है. Only difference is who has cited, done that citation. ये इस पेपर का citation इनके अपने फील्ड के लोगों ने साइट किया है, जिस फील्ड का पेपर है. इसीलिए this FWCI is very high. This paper has been cited by the non-relevant fields. That's why FWCI is less than 1. Is it clear? ये आप खुद मैनुअली कैलकुलेट नहीं करते हैं, ये ऑटोमेटिकली स्कोपस कैलकुलेट करके देता है पेपर वाइज. अगर स्कोपस का वेबसाइट काम करना शुरू करेगा तो आई विल शो इट टू यू हाउ इट वर्क्स. देन जर्नल इंडेक्सिंग, ये आपके लिए है नहीं. जर्नल की इंडेक्सिंग मैंने आपको बोला कि हमारे पास क्यों हम इंडेक्सिंग जर्नल की बात करते हैं, बिकॉज इट विल गिव यू ए बेटर विजिबिलिटी, better citation you will have. So we consider Scopus and Web of Science. For medical field, if you are in the medical field, then you can consider PubMed also, PubMed Central also. If you are from business fields, management fields, then you can consider this ABDC also. So these are the different indexing agencies who indexes journals. But for me, Scopus and Web of Science are two main indexing agency. Sir, what about elsewhere? Elsevier is same, ma'am. Scopus. Elsevier is an organization who has different subheads. So Scopus is belonging to Elsevier only. Okay, sir. Spencer, No. Springer is a publisher. okay. Springer is not indexing agency. Yeah. Again, Okay. Imbas is a database who is belonging to Elsevier only. Science Direct. Science Direct भी Elsevier का ही है. Okay. Elsevier का ही है. So these are the different subheads of the Elsevier. अच्छा, Nature is also publisher. Nature is publisher. सर आजकल स्प्रिंजर के बहुत सारे बुक्स चैप्टर
देखने के लिए आते तो आर ऑल रिलायबल या कुछ फेक भी हो हाँ, सकते स्प्रिंजर नहीं, के लिए? एस भी रिलायबल है, यू कैन गो इट। ठीक है, ये डिफरेंट डाटाबेसेस के कंपैरिजन है, दिस इज नॉट टू मच ऑफ सिग्निफिकेंट फॉर यू। हम जर्नल कैसे सर्च करते हैं ये मैंने कल आपको बता दिया था हल्का फुल्का। अब क्वार्टाइल देख लेते हैं एक बार, हाउ क्वार्टाइल्स आर गोइंग टू बी वेरी। क्वार्टाइल्स क्या होता है कि मेरे पास 100 का वैल्यू है, आई वांट टू डिवाइड इनटू, क्वार्टाइल मींस क्वार्टर, सो इन 100 वी आर हैविंग 4 क्वार्टाइल्स, Q1, Q2, Q3, Q4. Q1 is the best one. This is the top one and this is the best one. Then this is slightly of lower standard than Q1. Q2, 3 is lower than Q2 and Q4 is lowest one. अब Scopus भी, अब Scopus and Web of Science both divides paper on these 4 quartiles. हर एक पेपर को डिवाइड करते हैं क्वार्टाइल्स में. So journals are going to be divided into 4 quartiles, Q1, Q2, Q3, Q4. सबसे ऊपर वाले जर्नल जो होंगे, सबसे बेस्ट जर्नल जो होंगे, so that will fall under the Q1 category. So Q1 is the best category and ये कौन सा होगा, which is from 75 to 100 या 75 to 99, 75 to 99 ये लिखा हुआ कहीं पे वाले, ठीक है, लिख लीजिए आप, 75 to 99 परसेंटाइल जर्नल जो टॉप के, दैट इज इन Q1 कैटेगरी. Q2 इज सेकेंड क्वार्टाइल, सेकेंड क्वार्टाइल मीन्स 51 से लेकर के 75 तक. Q3 विल बी द थर्ड कैटेगरी, मतलब मेरे जितने भी जर्नल स्कोपस में होंगे, ठीक है, स्कोपस में या वेब ऑफ साइंस में होंगे, उनको हमने 4 पार्ट में डिवाइड करना है ऑन डिफरेंट क्राइटेरिया. वेब ऑफ साइंस डिवाइड करेंगे अपने इम्पैक्ट फैक्टर के बेसिस पे, स्कोपस डिवाइड करेंगे साइट स्कोर के बेसिस पे, ठीक है. तो जो ऊपर के 25 परसेंटाइल जर्नल्स होंगे वो Q1 में फॉल करेंगे, दैट इज 75 परसेंटाइल टू 99 परसेंटाइल. जो सेकंड उसके नीचे वाला होगा 51 से लेकर के 75 तक वाला, दैट इज फॉल अंडर द Q2 कैटेगरी. Q3 इज द थर्ड वन, 26 टू 15 एंड द 1 से लेके 25 तक Q4 में कैटेगरी में. ओके. अब so Q1 category, there if there are some journals which is falling under the Q1 category in Web of Science, it's not necessary that same journal will be in the Q1 category of Scopus also. It may be possible that quartiles of a journal vary from Scopus to Web of Science. One journal is Q1 in Scopus and it may be Q2, Q3, Q4 in Web of Science. It might be possible, or vice versa. So Scopus and Web of Science gives these quartiles. How we are going to find out the quartiles of the journals in Scopus? This is the so first we are going to go to scopus.com. This is the first step. Second step is click on the sources. You are going to see here by relevant area, by publisher, and by ISSN number. So you can find journal by 4 different ways: subject area, title, publisher, or ISSN number. So select title. If you know the subject area, means जो भी आपको select करना है, जैसे you find any journals, like we have find the journal of industrial textile. Q1 मैंने अभी आपको बोला 4 क्वार्टाइल. Q1 category, 75 to 99 is Q1 category. So this is because this is falling under the 84th percentile. So this is Q1 category journal. Clear? पता चल जाएगा यहाँ से. अब यहाँ पे एक और वैल्यू मुझे दिख रहा है 16/98 in material science. So in this journal falls under the Q1 category in the material science heading. Material science में Scopus के पास 98 जर्नल्स हैं
आउट ऑफ 98 दिस जर्नल बिलोंग्स, इसकी पोजीशन जो है वो 16वां पोजीशन है, 16th रैंक है. सो 16th इज द रैंक. Q4 में चले जा रहा हूँ. नहीं, Q4 नहीं. हम्म, This is in Q1 only, but this Scopus is having 98 journal for this field, material science field. Total number of journal is 98, जिसमें इस जर्नल की रैंकिंग जो है 16वें पोजीशन पे है, 16th पोजीशन पे ऊपर से. सर ये जो परसेंटाइल है वो क्या साइटेशन के बेसिस पे कैटेगराइज हाँ, किया ये गया है? क्वार्टाइल के बेसिस पे ही करते हैं वो. Okay, I got now. अब 16th is the position of the journal. जर्नल 16th पोजीशन from Okay, from 98. Okay. out of 98. It's a top 16, you can say. हाँ, you can call it, this is the top 16th. And here you can see the previous 4 years number of document, previous 4 years citations. If you will divide this citation by 350, divide citation by the number of article here, you will get this 4.8 value. This is the cite score value. How we are calculating cite score? Citation divided by the document gives you cite score. So if you will divide this one by 350, 1671 divided by 350. you will get 4.8. Is it clear? Yes. Then if let me see Scopus is working, then I'll just wait for a second. ये जो top positions आ रहे हैं, means Q1, Q2, Q3 and Q4, on what basis they are in top? So Web of Science Site divides score or what? Scopus divides on the basis of site score only. Site score, okay. Yes. Okay. See, like this is the journal which I was talking about. So this is in 99 percentile. I mean, this is the top journal. Yeah, it's Q1. In oncology, there are 415 journals. So 415 journals are there, and position of this journal is first. Yes. I will take some other journals and then I'll show it to you. Like for example, this journal I've selected. So if you'll see here, site score. This is updated monthly. This has been updated on 5th January 2026. Someone was asking question on this one. Why it is not January 2026 is visible here. You can see here. Clear? आप पिछला साइट स्कोर भी यहां से देख सकते हैं कि दिस जर्नल हैज व्हाट आर द साइट स्कोर इन 2023 2022. आप पिछले किसी भी चीज का देख सकते हैं. देन यू कैन गो टू हियर. अब यहां पे देखिए दिस जर्नल का नाम क्या है? एनुअल रिव्यू इन कंडेंस्ड मैटर फिजिक्स. दिस जर्नल्स, ये जर्नल दो फील्ड में पब्लिश करते हैं. इनके दो क्राइटेरिया है, मतलब दो एरिया को कैटर करते हैं. वन इज कंडेंस्ड मैटर फिजिक्स and second one is general matter science. Best score this is having in condensed matter physics. So total 443 journals are there in this field, and this journal's rank is 4th. चौथे नंबर पे होगा ये. See here. And this ranking is on the basis of site score. You can see here. Is it clear? हेलो. Yes sir. ओके. अगर मैं इसका फील्ड चेंज कर दूं, मैंने जनरल मैटर साइंस में चले जाऊं, तो दोनों नंबर चेंज हो सकते हैं. पोजीशन भी चेंज हो सकता है, 443 भी चेंज हो जाएगा. अब इस फील्ड में 460 जर्नल हैं, जिसमें इस जर्नल की पोजीशन जो है ना वो 6th पोजीशन है, जो आप देख सकते हैं. So these are all Q1 journals. Yeah. हाँ, these are Q1 journal, but Yeah, 99%. for any journals, their position, their ranking is going to change subject wise, area wise, in which area it is going to cater. Like for example, ठीक है. अब ये फाइटोमेडिसिन जर्नल आई हैव सेलेक्टेड.
This is 98th percentile in Q1 journals. In this field, in the field of complementary and alternative medicine, there are 112 papers are there, journals are there, and ranking of this journal is second position. Just click on this one and come down and see their site score and trends. So this journal caters in multiple fields. 1, 2, 3, 4, 5 field, different fields. Okay. If I will change its molecular medicine, so in complementary medicine the ranks was second, but in molecular medicine there are 177 journals are there, and rank for this journal is 23. और इसकी परसेंटाइल देखिए, there it was 98th percentile, here it is 87th percentile. So journals ranking or percentile, their quartile may vary by the relevant fields, so relevant area in which it is going to cater. Clear? Yes, clear. Any question anyone is having in the research matrices? Does anyone is having any question, or in the last we will take it, no issue. Okay. Something I had to talk about the references. Why papers are getting rejected? Because there are a number of regions. For me, to understand it, we have divided the regions for rejection of a paper into 3 categories. First category is general category. And if your paper does not cater any important issue, or paper is not very original, it is going to be repetitive of the earlier one. It is not falling under the scope or aim of the journals, or you're publishing the very old data which is now irrelevant or non-significant, and there are some conflict of interest or some ethical issue, paper will be rejected. Then second category why paper is going to be rejected, that is scientific reasons. If your hypothesis is not very clear, or experimental design is not properly managed, or sample biasness is there, or very small sample size you have taken it, wrong statistical tool you have used it, or conclusion is unjustified. These are some of the reasons why paper is getting rejected through because of the scientific reasons. And third one is the presentation or style. In that one, if you'll say, if your paper is very poorly organized or very badly written, some careless error will be there. Last one is if your paper is outdated or improperly cited. Different reference have different kind of styles. So paper will be rejected on the basis of that one only. So citation is one of the important criteria for paper publication. This is a well-written article, but where are references and bibliography? So why reference has been given? Because it gives you the credit to the original work. So there are some definition which we should understand it. Probably you might be knowing lots of different, we have citations. What is citation? Can anyone will tell me? What is the difference between citation and bibliography? What is the basic difference between citation and bibliography? Sir, as per my understanding, At the end of citation is that from where we are extracting the portion of the text which is being used in my paper, either in paper or in thesis or whatever be the writing form. Okay. That is citation. Okay. And bibliography is the list of books and journals and the source of information which has been gone through, which may have been used in my writing or may not have been used in my writing. Okay. Okay, good. So citation is, if you are talking about the citation first one, when you write a paper, in the text you are going to cite it, either number wise 1, 2, 3, 4, or author and year you are writing it. So that is called citation, means in text citation, inside the text, inside the main body of your paper. Whatever we give in the last, that is called reference list. So reference list is all those references which you have used in your paper. Bibliography is all those data
which you have read during the writing of a paper. Either you have included in the paper or you have not included in the paper. There might be some paper which you read it, but you are not using as a reference list in your paper. So whole thing is called as bibliography. Citation first means it is That means that we can put bibliography if we are even if we are no. not citing the thing. Bibliography is Sir, just my understanding is that giving the reference of that portion of books or either journal and books, etc., which may have helped me indirectly to make my understanding more clear and more understandable the subject it is on which I am working. So the credit must be given in the form of bibliography. It is just a gentle gesture. Otherwise, in the form of references which we cite, that is for plagiarism also, purpose also. If sir, that portion of the person I am giving the credit, this has been no, used say, in my paper. sir, yeah, that citation is for giving the credit only. If you want to give some credit to the original contributor, so you cite that paper and you give in the reference list. Yes, sir. So, like see, during the writing of my paper, I have read 100 papers. Okay, but in my article, when I am going to write articles, I am going to use only 75 of those 100 out of those 100 papers. So 75 is called as my reference list, but Yes, sir. total 100 is known as bibliography. So bibliography Yes. means all those informations, all those data which you have studied or which you have either you are going to use in the paper or you are not going to use in the paper. So to whom you Yes, have sir. referred. But my precaution is always that only those things should be included in the bibliography, not to impress the publisher or not to impress anyone No, that no, I have gone through. Yes, yes. bibliography is the list of those data which you have considered during your study, during the Yes, analysis. genuinely. Sometime I have seen that some of person using a long, huge list of bibliography just to make an impression. Is so much of length of a study and so much volume of a study I have gone through before writing this paper. This is not good practice, I Bibliography think. generally will be there We, in the books huh, rather No, 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 in no, no, no. no, Journal maybe journal, online citation, etc. Everything should be given in the bibliography. Sir is more yeah. knowledgeable in this area, but my understanding is that only. so these are the three things. That one. Then we are having citation style. Citation style is in which mode you are going to write, because this is varying journal to journals. I will show you some of these citation styles. Then we are having annotated bibliography. I will show you one of the example. And literature search and literature review already we have discussed in the details. Like this is one of the bibliographic written informations where we have almost everything. Now, different referencing style is citation and reference should be included in your report according to the specific format. Format is already given by the different publisher or different journals. These formats depends on the two criteria, two things. First one is the type of source you are going to use it. If you are going to use journal as a reference, so journal information will be in the different style. If you are doing reference from the books will be written in different style. If you are doing website will have different style. So which type of source you are going to referring? So the style varies according to the source. And second one is the style given by the publisher, like APA, MLA, Chicago, Harvard, or IEEE, or different other things. So these two important things which changes your reference styles. These are the different reference style. This is one of the example. This is common practice. If journal has not mentioned that in which reference style you have to write it, then this type of this we are going to consider it. Vancouver style can be considered for medicine fields and the sciences field. APA, whose full form is American Psychological Associations, is mainly for psychology, education, social sciences, and sociology. MLA, normally for liberal science, languages, and humanities. ACS, chemistry. IEEE for engineering and computer science fields. Harvard for social science, business management. CMS or CMS, history, science, social science. If it is not mentioned by the given by the journal,
Most of the cases journal gives you that in which style you have to write your references. अगर जर्नल ने नहीं प्रोवाइड किया है, then we follow use any of these according to the subject area. हाँ, नहीं एपीए भी जो है साइंस जर्नल्स यूज करते हैं, कर सकते हैं. मैंने बोला कि दिस इज दी प्रेफरेंसेस. Preferences, okay. Yes. Okay. You can use anyone. Like if chemistry people can use Vancouver style, chemistry people can use Hoover style. No one is going to stop you. But preference is chemistry. Right. If not mentioned, I should use American Chemical Society. Okay. Like say for reference publication, these are the different type of references. So manually, if you are going to do it, you have to see colon, semicolon, year. Like here, year is just after the name of the author and without bracket, full stop. In second, it is written in the bracket. Title is highlighted, means it is bold. Journal's name is normal. In this case, journal name is italics. Author, year is in the last without bracket. So if you are going to use, if your paper is having lots of references and manually if you have to change from one format to other format, it will take lots of time. So because of that one, we are going to use different kind of reference management tool, and most of these tools are the paid tools. So reference management tools normally helps you to organize, annotate and manage your references, and within minutes you can change from one style to other style. These are the different reference management tools. I don't say you can use as per your choice. Mendeley is free, so Mendeley can be used by everyone. Otherwise, rest of the things are paid tools. Why we are going to use it and how we are going to decide these tools on different criteria. So let's we will not discuss as per the availability of the tools to you, or which type of tools is available to you. You can choose that tool for your purposes. So, and the last portion of that discussion will be how you can improve your research visibility or research citations. So this I was talking about, say, primary and secondary. So all these things are not going to be considered for the evaluation of impact factor and the CITE score. This thing already we have discussed. So if you'll see the Scopus, normally every day Scopus adding lots of different informations. There are roughly 87 million records is available into the Scopus and 27.1 thousand serials. So this is the Scopus database informations. So much of information is available with the Scopus. These things already we have, that's why I'm skipping. How you can increase your research visibility? For that one, everyone must have their account on some profile. Like, just give me 1 second. How to boost your research visibility? Research visibility means once your paper will be visible to someone, then only people will cite your paper. So as much as possible, publish in the open access journals, so that your paper will have more readers. If your paper people will more read it, they will more download it. Your alt metrics, your download counts will increase, and citation will also increase. But remember one thing: open access charges. So if you are having money, then only you can go for open access. Otherwise, you have to publish in the subscription version. Next one is leverage social media. Use social media platforms. Because most of the times we see reels and other things, these are not going to help our visibility. You have to use scientific social media, like you can use ResearchGate. Everyone must have their account on ResearchGate. Everyone must have account on LinkedIn. Everyone, whenever you publish any kind of information, share it on the different platforms so that people will understand, people will know about your research capability or your research publications. As much as collaboration you will do it. I have given you one of the analysis for how paper citation is going to be increased. There I have talked about if your paper have 6 or more than 6 authors from different organizations, your paper will have more citations. So collaborate actively.
engage in outreach, build an online presence so that more visible, and seek media coverages. So this, if possible, if you have fonts or if you are having any hooks and crooks, so that your paper will be will have more readers. This already we have discussed about. These are the 6 different tips how paper will have high more citations. And you can take a screenshot of this one. Everyone should have their account on these platforms. Sorry. So this is ORCID. ORCID is Open Researchers and Contributor ID. Research, then Bidwan, Academia, and Scopus. And one thing I have missed is Google Scholar. One thing I have missed is ResearchGate. So please take a screenshot, create your profile on these platforms, and share your research outputs, your contribution to the scientific community on these different platforms. So this will increase your social presence, online presence, and increase your citations also. These are the different other platforms which we are not using too commonly, like Figshare. Your all the images which you have published in your articles can be shared on GitHub or the Figshares, Vimeo, LinkedIn profile. This is one of the best professional social platforms where you can find jobs also, you can find book calls also, you can find papers calls also, you can connect with the different researchers, different organizations. How this GitHub will help us? GitHub. You can share it, sir. These are the platforms हाँ, where you can share your research outputs. ओके ओके। एक नया भी आया ना, डिस्कॉर्ड। Lots of different things are there. हाँ हाँ। So consider where you are publishing. Thing is which journal you are selecting, because if you are publishing in a non-index journal, not good journals, it will not be visible. If you are before publishing, select a good journals which will give you a better output. These are the 3: Academia, LinkedIn, and ResearchGate. So ऐसा कोई जर्नल यानी जो पहले हम पब्लिश कर चुके हैं व्हेन इट वाज नॉट ऑनलाइन, तो वो हार्ड कॉपी में आता था। So if I want to visualize that journal, you can तो कैसा करेंगे? you can take the first page of the screenshot and make a. You have Chat GPT, right? Yes. You can write in the Chat GPT. They will create a kind of a content for you for LinkedIn or Facebook or different platform. Okay. Means screenshot लेकर हम हाँ, कर सकते हैं. You can do it. Okay. You can make it in your PowerPoint also. हाँ। You can. उसका DOI मतलब DOI वगैरह कुछ भी नहीं रहता है। कोई बात नहीं। पुराना हार्ड कॉपी में आता था पहले तो। No at all required. Means ISSN number is there na, that is Okay. That can be used. Okay. So this is how, if your different technology, if you are doing research alone, visibility will reduce. Then we are having different, when we combine with 2 different fields, more than 2 different fields, these are multidisciplinary, interdisciplinary, or transdisciplinary. So as much as collaboration will be there, research visibility will be multiplied in that much fold. So try to collaborate with interdisciplinary, transdisciplinary fields, so that you will be visible in different area or different fields also. Like why collaboration is required? If A is alone, it is A square, B is alone, B square, A plus B is A square plus B square. Bodhiji has also used this formula some time back. What collaboration can do, like if you'll see here, this is the Q1 journal, top 25%, 26 to 50. This is top 25. Then from top 26 to 50, जो मैंने बोला था. अब if you are having international collaborations, citation will be, if you'll see here, citation 40,000. This is for one of the institutions, LPO. If we have in national collaboration, 26,000 citation. If you are having international collaborations, roughly almost slightly less than the double.
Only institutional collaborations, less citations. Single author, no collaborations, less citation. So if you are having collaboration and that will be also international collaborations, it will increase your presence as well as the citations. So try to collaborate, try to write multi-authors papers, multi-author things. And these are some of the tips to increase your citations. So cite high quality in your paper. Also in your paper, also when you are writing your paper, uh, in references use best papers, best journals papers, good journals papers. Consider writing a review or a concept paper, because normally review paper is having better citations compared to the work paper, original paper. Publish in reputed journals, publish in open access journal if possible. Optimize your paper's title. As some tips I had told you that day, how to mm, frame a better title so that it will have a better impact. 4 questions I had given you. It should be eye catchy, it should be concise, it should be giving you the information about the paper. So according to that one, you can plan your title. Use the same format in your name in all the paper. Like my name is Pranab Kumar Prabhakar. So in one paper I'm going to write Pranab Kumar Prabhakar. Some other paper I will write PK Prabhakar. Third paper I will write Pranab K Prabhakar. This is not recommended. So use the same name, same style name in all the papers. Uh, and always use your ORCID ID in your papers. Whenever you are submitting your paper, besides your name, in the bracket you can write your ORCID ID, so your paper will be automatically linked with your ORCID account. If possible, if it is required, you can cite your own paper also. However, it will be self-citation, but if it is matching with your paper, you can cite it. So this is okay. This is all about for today. And then these are some of the tips like choice and use of keywords. You can keywords in the titles, you can use it. Cite accurately, don't give wrong citations. Permanent identifier is ORCID. I have already told you, you can use ORCID. Accessibility is to increase your accessibility of your paper in publish in the open access journals. Continuously promotion of your papers on different media, different social media, different channels or conferences. So this is last 10 easy way to increase your citation count. So you can I will share with slides with you or Gopal sir, he will share with you. Okay, so this is all about for sessions. And now सर आज का वीडियो भी मिल गया तो बड़ा अच्छा होगा सर। देंगे सर, देंगे सर, मे भी रिकॉर्ड कर रहे होंगे तो सर विल शेयर विथ यू। नाउ हो गया। हाँ, मेरे तरफ से हो गया। आप क्वेश्चन आंसर इनके जितने भी क्वेश्चन है वो हम ले लेते हैं। Meantime, I have shared feedback Google form also in the chat box. So everybody should write feedback form and write your correct name so that you will receive certificate whatever you are writing name there, है ना? और उसी मेल आईडी मिलेगा आपको। So आप Google form I have shared. So just write there and question, if there is any question so ask. Otherwise, I request few of you to share oral feedback also. Sir, thank you, sir. Pranav sir, This you is have given mandatory very. to write written feedback in that Google form, and you should also share your oral feedback. Sometimes it's good. सर ओरल फीडबैक तो रियलिटी है कि इट इज एक्सीलेंट, मतलब कोई मक्खनबाजी नहीं है। रियली प्रीवियस सेशन भी सर का हमने किया था, काफी हमको हेल्प मिला था, बिकॉज आई एम वेरी मच न्यू एंट्री इन द फील्ड ऑफ research, doing my PhD at this age. For a long time, I have been an advocate for 25 years, but now in the field of Please research. introduce, sir. Please introduce. My name is, sorry, just let me open my video Yes, also. yes. My name is Prashant Kumar, practicing here in Delhi at Supreme Court and High Court, and presently I am doing my PhD in law. Though law is not associated directly with this scientific background, but mostly they are overlapping. Research is the same thing. They are two sisters, I think, either in social science or in natural science. So most of the things what has been discussed here is very much useful for me, very much useful, and that has been used by me in one publication. Just my first publication is going to be published,
and it has been very much appreciated by VC. One of my writing has been added in the National Services Authority Act book, published book. One of and these information has been used because I am doing my part-time PhD, and very less information I do receive every time from my library and my professors. But this type of platform being used and helping a lot the real and robust and original researchers. And sir is very nice. So I keep follow in him touch, sir. everywhere, That is even in very good. LinkedIn. What has been said by the sir is very much helpful. And from Yes. LinkedIn only, I got his connection. Thank you, sir. It is my humble submission to you that you really are a great teacher, guru. Thank you, sir. बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। हैं ही सर, हैं ही बहुत अच्छे हैं, और इसीलिए हमने जो रिक्वेस्ट करके, और ये बहुत अच्छा है कि नॉट ओनली साइंस एस्पिरेंट्स और साइंस स्कॉलर, अदर स्ट्रीम पीपल हैव आल्सो ज्वाइंड एंड एंजॉयड एंड लर्न। दैट इज वेरी वेरी गुड, एंड इट आल्सो गिव्स अस एनर्जी, है ना। नहीं, रिसर्च का ट्रेड तो मुझे एक ही लगता है। अब वो आपका सब्जी सब एक ही है, इंग्रेडिएंट मसाला बेस सब एक ही है। अब किसी चीज की बना लीजिए, तो मैं आपके ज्ञान का यूज मैं अपने सोशल साइंस में कर लेता हूँ। मैं बिल्कुल। भी साइंस बैकग्राउंड का ही हूँ, मैंने जूलॉजी से ऑनर्स किया हुआ है। अच्छा। देन आफ्टर आई डिड माय LLB फ्रॉम हियर इन दिल्ली यूनिवर्सिटी। तो इट इज वेरी मच यूजफुल फॉर माय लॉ आल्सो। बहुत थैंक यू अच्छा, सर, थैंक बहुत यू, अच्छा। थैंक्स अ लॉट सर। थैंक यू, थैंक यू। अदर पार्टिसिपेंट्स, I request you to introduce and then share. Yes, yes, please. Okay, Yes. can I speak? ये मुकेश जी को बोलने दीजिए, फिर कसीम सर बोलिएगा, है ना, प्लीज। हाँ। myself डॉक्टर पिंपलेस्कर, डॉक्टर मुकेश पिंपलेस्कर। जैसे कि एक्चुअली हम ऑलरेडी एकेडमिक रिसर्च में बहुत सालों से हैं, लेकिन सर के बारे में मैंने बहुत सारे प्लेटफॉर्म पे सुना, और गोपाल सर को भी पता है कि मैं कोई मौका छोड़ता नहीं हूँ सीखने का। तो एकेडमिक राइटिंग में हम लोग ये पेपर पब्लिश करते हैं, लेकिन सर ने जो जितने भी इंसाइट्स दिए हैं वो शायद ही कोई बंदा दे सकता है, जो इतने डीप हर एंगल से सर ने कवर किया है। मतलब फ्रॉम स्टार्ट ऑफ राइटिंग अ पेपर टिल साइटेशन, इम्पैक्ट फैक्टर, कौन सा जर्नल सिलेक्ट करना है, कैसे करना है। तो बहुत सारे नए इंसाइट्स आप लोग सर की वजह से मिले हैं। थैंक यू वेरी मच सर। और एक रिक्वेस्ट है, अगर पॉसिबल हुआ तो कैन यू शेयर अ लिस्ट ऑफ जर्नल हु डू नॉट चार्ज APC फॉर स्टूडेंट्स, या जो जनरली PG स्टूडेंट होते हैं हमारे, तो दे कैन नॉट अफोर्ड गुड जर्नल का APC। तो ऐसे अगर स्कोपस या वेब ऑफ साइंस के जर्नल आप अगर खास करके बायोलॉजिकल साइंसेस में अगर आप शेयर करोगे तो दैट विल बी अ ग्रेट हेल्प। थैंक यू वेरी मच सर। विल सी यू बहुत अगेन इन रिक्वायर्ड।